जी पढ़ो कहाँ से पढ़ना है हाँ so Haris ibn Hammam said I had separated from Abu Zayd Saruji for some time, never seen him, but when I came back to my hometown, one day I went to the library where the linguistics sit and read, and I saw this person reading, and someone asked him any share, and he said some couplet, and I said, this is amazing. So the person who had entered with thick beard and Paraganda Hayat, he said, oh, this is not that big share. You've taken something swollen or something full of flesh. I said that, where are you from this share? So they said, wow, this is a Ajib, who is it? And he said, it's my share. So they said, nah, yeah, he's bluffing. So when he realized that they are doubting him, he said, okay, you can test me. So one person said, I know of a couplet that no poetry has been made like it. And there is Ajib Tashbih in there. So if you want to captivate us, then make share like this one. And he said, فَأَمْطَرَتْ لُؤْلُؤًا مِّن نَرْجِسٍ وَسَقَتْ وَرْدًا وَعَضَّتْ عَلَى الْعُنَّابِ بِالْبَرَدِ. So she rained down pearls from Nargis, and she gave water to the rose, and she bit on Unnab with hailstones. فلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب حتى أنشد فأغرب. It was not anything but like the blink of an eye, or even more closer, that he composed a poet, he said, sung a poetry and sung amazing one. He said, سألتها حين زارت نضوى برقعها القاني وإيداع سمعي أطيب الخبر فزحزحت شفقا غشا سنا قمر وساقطت لؤلؤا من خاتم عطير. I begged her when she visited me to remove her red burqa and to place in my ears the most pleasant news. So she removed Shafaqi Ahmar, the red horizon, which had covered the light of the moon, and she threw down pearls from a ring which is full of perfume. فحار الحاضرون لبداهته واعترفوا بنزاهته. Those present were speechless upon his filbadi kalam, and they admitted to his purity and being free from shukuk and doubts. فلما آنس استئناسهم بكلامه, when he perceived and noticed their becoming familiar with his kalam, وانصبابهم إلى شعب إكرامه, and their leaning towards the ghati and the route of his ikram and i'zaz, honoring, أطرق كطرفة العين, he lowered his head in the blink of an eye. ثم قال, then he said, دونكم بيتين آخرين, you can have another two couplets. وأنشد, and he sung this poetry. وأقبلت يوم جد البين في حلل سود تعض بنان النادم الحصير فلاح ليل على صبح أقلهما غصن وضرست باللور بالدرر. And she approached the day
our separation was certain. In black suits, she was biting on the fingertips of a shy, speechless person. So the night appeared on the shining bright morning. Both were carried by a beautiful thin branch, and she bit on the below the beautiful shining mirror with pearls. These are some tashbihat and beautiful tashbihat in there. फिर से पढ़ो. And he sung the poetry فَأَمْطَرَتْ لُؤْلُؤًا مِّن نَرْجِسٍ وَسَقَتْ. She, meaning my mahbuba. This poetry which the person sang is for Abul Faraj ad-Dimashqi, who made this, composed it. She rained down. Matar means rain. Amtara yumtiru imtaran means to rain down. Barsana. Usne barsaya. Lu'lu'an, she rained down pearls. Min narjisin, from narjis. Nargis in Arabic is the flower nargis in Urdu and Farsi. And wasaqat wardan, and with that rainwater she gave water to the rose. Wardun, rose. Saqa yasqi saqiyan, pilana. Usne pilaya gulab ko. وعضت على العناب بالبرد, और उसने काटा. عض يعض عضا, काटना. عضوا عليكم الأنامل. And she bit on unnab. Unnab is a red flower, red in color. Bilbaradi, and with ole, hailstones. यहाँ पर लिखा है unnab, a red oval fruit resembling the olive in shape, is called unnab. Now over here, what is the meaning of these tashbihat? فَأَمْطَرَتْ لُؤْلُؤًا, and she rained down lu'lu, pearls. Pearls means tears, ansu. Min narjisin, narjis is the beautiful nargis fruit, flower. And the tashbih with nargis is for her eyes. So she rained down pearls from nargis flower, meaning tears from her beautiful eyes. And wasaqat wardan, and she gave water to gulab. By gulab, her beautiful cheeks are meant. So the tears rained down on the cheeks. She gave water to their beautiful pinky cheeks. And wa'addat ala al-unnabi bil-baradi, and she bit on unnab with the hailstones. Unnab is kinaya from her fingertips and her nails, which were covered with mehndi and henna, and which were red, like the red flower. And barad, the tashbih is with her teeth. Do you get it? Again, उसने मोती बरसाए नरगिस फूल से, और पानी पिलाया गुलाब फूल को, और उसने काटा उन्नाब फूल को ओलों से. हो गया जी, 3 फूल और तशबीहात. मतलब ये उसने, she rained down tears from her beautiful eyes like nargis flower, and she gave water to her cheeks, which were like pink in color, and she bit onto her fingertips with her nails, which were red with henna, with her teeth. Addu, bite. So this is a beautiful sher, and it's got beautiful tashbihat in there. So if you are really the composer of the previous poetry, then make something like this. فَلَمْ يَكُنْ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ. That mehman who had come there,
He did not wait for anything but the blink of an eye, meaning in an instant, or even more closer than that, until he sung poetry and amazing poetry. This is in the Quran. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ. The matter of Qiyamah to Allah is nothing but like the lamhul basar, blink of an eye, or even more closer. Anshada, शेर पढ़ा. فأغرب أغرب يغرب إغرابا. बाब इफ़आल से جاء بالشيء العجيب الغريب, to bring something अजीब व गरीब, surprising. سألتها حين زارت نضوى برقعها القاني. When she came to visit me, I begged her to remove her red burqa. سألتها سألت المحبوبة حين زارت زار يزور زيارة visit. نضوى نضى ينضو نضوا نضوا के माना हटाना, to remove. And निضवन पीछे आया था ना, ऊंट को लागर कर देना, बिकॉज उसका गोश्त हटा दिया, उसको इतना भगाया उतना भगाया कि वो बेचारा पतला सा हो गया, उसका सारा गोश्त आपने हटा दिया. तो नदा निद वहाँ उस माना में इस्तेमाल हुआ था. तो नदा यंदु नदवन के माना असल हटाना, रिमूव. बुरक़ा हल्कानी, बुरक़ा जमा बराक़, ये वो जो बुरक़ा जो मुंह पर ढकने का होता है, उर्दू में भी उसको बुरक़ा ही कहते हैं. अलकानी is from qana yaqnu, which means to be red. So alqani means al-ahmar. She was wearing red burqa. Red color is beautiful, very nice looking. And ida sam'i, bright red nahi pehenna chahiye because it's too flashy for wearing outside. Dark red है, dark maroon है, dark green है, वो पहन सकते हैं. dark blue है, हो गया ना. ये black जो है, शेख यूनुस साहब से भाई ये काला जो है कोई इस्लामी कलर नहीं है. औरतों ने पता नहीं ये काले को क्यों इस्लामी बना दिया है. कोई भी मुनासिब कपड़ा पहन सकती हैं, किसी और कलर का हो, बस इतना है कि बहुत ज़्यादा फ्लैशी और अट्रैक्टिव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अट्रैक्टिव कपड़े को तो छुपाना है. तो अंदर जो है आप खूबसूरत रंग बिरंगी कपड़े पहनो, लेकिन ऊपर जो है सादा कपड़ा होना चाहिए, तो उससे पर्दा होगा. एनीवे, वईदा समई अतयबल खबरी औदा यूदिउ ईदान मीन्स रखना, वदियत मीन्स अमानत. सो औदा टू प्लेस, समई मेरे कान में, इन माई ईयर्स. अतयबल खबर ताब यतीबु तीबन, उम्दा होना, टू बी प्लेजेंट, टू बी नाइस, द मोस्ट प्लेजेंट न्यूज़. फज़हज़हत शफ़क़न, ज़हज़ह युज़हज़िहु ज़हज़हतन मीन्स हटाना, to move, to remove. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. Shafaqan, shafaq means the red horizon. When that shafaq ahmar disappears, then it's time for Isha, according to Jumhur. Imam Abu Hanifa says shafaq abyad, but Aimma Salas and Sahibain say shafaq ahmar. So when sun sets, there is this beautiful red color covering the horizon. आसमान के किनारे पर लाल लाल कलर छाया हुआ होता है, उसको शफक कहते हैं. तो उसने हटाया शफक को. गश्शा सना कमरिन, विच उसने ढांक रखा था चांद की चमक को. गश्शा युगश्शी तगशियतन के माना ढांकना, टू कवर. सना यकादु सना बरक़ी यज़हबु बिल अबसार, चमक. कमर चांद, चांद की चमक को छुपा रखा था. Which has she removed shafaq, which had covered the chamak and the light of the moon. وساقطت لؤلؤا من خاتم عطيل. ساقط يساقط مساقطة के माना गिराना, to fall. سقط يسقط سقوطا, to fall lazim. تساقط عليك رطبا جنيا, it will throw on you. So ساقط के माना to throw कर दो, and she threw and she rained lu'lu'an, pearls, min khatamin atili, from khushbudar anguthi. Khatam means ring, jama khawatim, and atir is sifat mushabbaha from atira ya'taru ataran ke mana khushbudar hona. So she threw down pearls from a fragranced ring. Now,
First share is clear. In the second share, सहसात शफकन, शफक से मुराद क्या है उसके यहाँ पर? शफक अहमर, द रेड horizon. बोलो, उसका लाल बुरखा, because she was wearing red burqa. So she removed shafaq, meaning her red burqa. Ghasha sana qamarin, which was covering the shine and the light and the glitter of the moon. What is the moon? Her face. And sana, her chamak, means her beautiful chamakdar, chamkila face. तो चेहरे पर जब वो मेकअप शेकअप लगाती हैं, चमकाती हैं उसको, तो उसके चमकदार मुंह से उसने लाल लाल बुरखे को हटाया और उसने मोती गिराए. मोती, the tashbih with moti is for her words, her beautiful words, because he had said, give me some pleasant news. So she spoke, min khatamin atiri, khatam anguti is round. So over here, the tashbih is with her lips. The lips were beautiful and round like अंगूठी and ring, and atir means खुशबूदार, meaning उसके मुंह से खुशबू आ रही थी. वो सेंसोडाइन टूथपेस्ट से ब्रश करके आई थी, उसके मुंह में मिंट की खुशबू थी. तो खुशबूदार मुंह से उसने अपने मोती गिराए. जब उसने ये शेर पढ़ा तो हारल हाजिरून लिबदाहतिही, हाजिरीन हैरान हो गए उसके फिलबदी कलाम से, बिकॉज उसी वक्त बैठे बैठे उसने ये शेर बना दिया. पहले से उसको ये पता नहीं था कि ऐसा शेर बनाना है. तो बदाहत मीन हार यहारु हैरतन, हैरानन के माना चकरा जाना. तो they were flabbergasted, they were bewildered. हाजिरून प्लुरल ऑफ हाजिर, लिबदाहतिही बदूह यबदुहु, बदाहतन के माना क्या है? फिल बदीह कलाम करना, बगैर तैयारी के फौरन बोलना, एकदम से बोलना शुरू कर देना, उसको कहते हैं फिल बदीह. तो उसकी फिल बदीह कलाम से हाजिरीन हैरान रह गए. वातरफू बिनज़ाहती ही, और उन्होंने एतराफ़ किया कि वो मुनज़्ज़ह और पाक साफ है. एतरफ़ यातरिफ़ु एतराफ़न मीन्स इकरार करना. अन्नज़ूह यनज़ूहु नज़ाहतन मीन्स पाक साफ होना और बरी होना of his purity, that he is pure, he is clean, he knows his stuff, and he is pure from any doubts and shukuk shubuhat. فلما آنس استئناسهم بكلامه, آنس يونس إناسا महसूस करना, when he perceived and he realized, آنس من جانب الطور نارا, استئناسهم أنيس يأنس أنسا के माना मानूस होना, and istanasa means manus hone ko talab karna. When he realized that they are becoming manus and familiar with his kalam and speech and talk, wan sibabahum, in sabba yansabbu, in sibaban ke mana ma'il hona, sabba yasubbu sabban. What is the literal meaning of sabba yasubbu? To pour. So in sabba means to pour yourself to someone. So when he noticed that they are leaning towards ila shi'bi ikramhi. Shi'b is a tariq fil jabal. The road passage between two mountains is called shi'bun. Okay जी, तो पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकते, तो घाटी में से गुजरना पड़ता है ताकि सफर आसान हो जाए, पूरा पहाड़ न चढ़ना पड़े, तो उसको शि'ब बोलते हैं. अल इंफिराज बैन अल जबलैन. So towards the road and the passage of his ikram, meaning they are intending to honor him, और उसकी इकराम की तरफ माइल हो रहे हैं, इकराम की घाटी की तरफ. तो अतरका युतिकु इतराकन के माना सर झुका लेना, मुराकबे में चले जाना. ही लोअर्ड हिज हेड एंड क्वाइट, और सब लोग भी स्पीचलेस कि भाई इज गोना कम अप विद समथिंग. सो ही लोअर्ड हिज हेड कतरफतिल आइन, लाइक द ब्लिंक ऑफ एन आई, in the blink of an eye. ثم قال, and then he said, दूनकुम बैतैन आखरैन, here take two other shares. दूनकुम यानी इल्जमू, खुजू. Okay, दूना is from asma yaf'al. तो दूनकुम यानी खुजू बैतैन आखरैन, two other बैत. अनशद शेर पढ़ा, वाक़बलत यौम जद्दल बैनु फी हुललिन, अक़बल युक़बिलु इक़बालन के माना सामने आना, अदबर युदबिरु इदबारन पीठ फेर कर जाना, to proceed, to come forward. She came forward, she appeared, she came. Yawma jaddal baynu, the day when separation was yaqini. जद्द यजिद्दु जद्दन के माना हकीकत हो जाना, हकीकी होना, रियलिटी होना. और बैनु बान यबीनु बैनन means जुदाई, फिराक, meaning her family were
leaving our hometown, and we were going to be separated. They were moving to another town, another city. So the day when our separation was certain, she came to visit me. في حلل سود, kale jode mein. Hulal, plural of hullatun. Hullatun means suit, clothing where the upper part and lower part is same. And suit, plural of aswad. She came in black cloaks and black suit. تعض بنانا النادم الحصير. عض يعض عضا ويوم يعض الظالم على يديه. Katna, to bite. She was biting onto banan, the fingertips. بلا قادرين على أن نسويا banana, ye fingertips. To fingertips. She was biting onto the fingertips like this. She was of النادم الحصير. नादिम नदीम यंदमु नदामतन के माना नादिम होना, शर्मिंदा होना, regretful, remorseful होना. She was holding on, she was biting. And al-hasir, पीछे आया था ना शुरू में हसीर. हसीर यहसरु हसरन के माना क्या है? To be speechless. So she was biting onto the fingertips like the biting of a person who is nadim and hasir, who is sharminda and regretful, remorseful and speechless, unable to say a word because we loved one another and she didn't want to go, but the family was going. She had no choice. So on that day, فَلَاحَ لَيْلٌ عَلَى صُبْحٍ أَقَلَّهُمَا, night shone or appeared upon the subh sadiq, stroke of dawn. फलाह लैलुन, लैलुन से किसको तशबीह दी है? उसके काले काले बुरखे को. So the black burqa is like the darkness of the night. Ala subhin, subah से तशबीह दी है उसके चेहरे को, because she removed her veil and burqa, and her face was like the light of the morning. Subh sadiq. So the darkness of the night appeared over the light of the morning and stroke of dawn. أقلهما, أقل يقل إقلالا के माना उठाना. أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت على رسول الله ما لم أقل. हज़रत अबू बकर का इरशाद है. तो अक़ल्ल के माना उठाना, to carry. And they were both, the night and the morning were carried by غصن. غصن means tehni, a branch. Then tehni जो होती है, branch of a tree, is not thick, it's thin. So with the branch, her beautiful thin body has been resembled. Meaning the burqa and the face were both carried by her beautiful slim body. وَضَرَّسَتِ الْبِاللَّوْرَ بِالدُّرَرِ, and she bit onto the beautiful shining mirror with pearls and motis. दर्रस युदर्रिसु, दिर्स means दाढ़. दिर्स के माना ये क्या कहते हैं? पीछे की दाढ़, हाँ, मोलर टीथ, हाँ, उसको दिर्स कहते हैं. तो दर्रस, उसने काटा. बिल्लौर को, बिल्लौर के माना आईना. आईने से मुराद यहाँ क्या है? उसके ब्यूटीफुल चमकीले नेल्स, फिंगर नेल्स. तो उसने अपने फिंगर नेल्स को काटा बिद्दुररी, मोतियों से. मोती से मुराद क्या है? उसके ब्यूटीफुल टीथ. तो उसने अपने दांतों से अपने अपने पोरों को काटा, ये मीनिंग है. बस आगे फ़हीन ईदिन इस्तस्नल कौम क़ीमतहु वस्तग़ज़रू दीमतहु, उस वक्त लोगों ने उसकी कीमत को बहुत बुलंद समझा. The people realized the height of his price. वस्तग़ज़रू दीमतहु, and they felt that his धीमी बारिश, his drizzle is in reality heavy rain. وَأَجْمَلُوا عِشْرَتَهُ, and they beautified his bartaw and muamala. وَجَمَّلُوا قِشْرَتَهُ, and they beautified his chilka, covering, meaning they gave him good clothing and good libas. Istasna, sana means buland hona, istasna buland samajna, कीमत प्राइस. इस्तग़ज़रा गज़ीर means कसीर. इस्तग़ज़रा means बहुत ज़्यादा समझना. और दीमतुन means al-मतर daim, a continuous drizzle, rain which has slow small क्या कहते हैं drops, but is continuous. That's called दीमा. And अजमल युजमिलु, खूबसूरत करना. जम्मल भी खूबसूरत करना. इशरत के माना मुआशरा और बर्ताव.
और उसके बर्ताव को खूबसूरत किया, और जम्मलू किशरतहू, और उसके कपड़े को खूबसूरत किया। किशरतुन असल में छिलका, तो ऑरेंज का फील जो है ना उसको छिलका कहते हैं। तो उसके 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 छिलके को खूबसूरत किया, यानी उसके कपड़े, उसको नए कपड़े लाके दिए कि ये क्या तुम फटे फटे कपड़े पहने हुए है, लो जी नए कपड़े खरीदो और उसके लिए नए कपड़े बनाओ। तो नया जुब्बा लाके उसको दिया, नए कपड़े दिए, उसको अच्छे पैसे दिए, उसका मामला दुरुस्त किया। आगे हारिस हम्माम बाद में पढ़ना, तर्जमा कर लो शुरू से, उर्दू में पहले कर लो फिर इंग्लिश में करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस उसने मोती गिराए नरगिस फूल से और गुलाब को पानी पिलाया, और उसने काटा उन्ना फूल को ओलों से, फिर वो न ठहरा मगर आंख झपकने के बराबर या उससे भी ज्यादा करीब तर, यहाँ तक कि उसने शेर पढ़ा और अजीबो गरीब शेर पढ़ा। मैंने महबूबा से रिक्वेस्ट की कि वो अपने लाल बुरखे को हटाए जब वो विजिट करने आई, और मेरे कान में अच्छी अच्छी खबरें रखे, मीठी मीठी बातें करे मुझसे। तो उसने शफक को हटाया जिसने चांद की चमक को छुपा रखा था, और उसने मोती गिराए खुशबूदार अंगूठी से। बस हाजिरीन हैरान रह गए उसके फिलबदी कलाम से, और इकरार किया उसके पाक होने का। फिर जब उसने महसूस किया कि वो लोग मानूस हैं उसके कलाम से और माइल हैं उसके इकराम की घाटी की तरफ, तो उसने गर्दन झुकाई पलक झपकने के बराबर में। फिर उसने कहा, तुम पकड़ो दो दूसरे शेर, और शेर पढ़ा। और महबूबा आई जिस दिन फिराक यकीनी हो गया, सियाह जोड़ों में काट रही है शर्मिंदा खामोश पड़े हुए इंसान के पोरों को। बस जाहिर हुई रात सुबह सुबह पर जिन दोनों को उठा रखा था एक टहनी ने, और उसने काटा आईने को मोतियों से। बस उस वक्त लोगों ने उसकी कीमत को बुलंद समझा, और उसकी धीमी बारिश को बहुत ज्यादा समझा, और उसके मुआमले को अच्छा किया, और उसके कपड़े को खूबसूरत किया। She rained down pearls from Nargis flower, and she gave water to rose flower, and she bit on Unnab red flower with hailstones. So he did not remain for any time except like the blink of an eye, or even closer, until he sang a couplet, and he sang amazing couplet. I asked her, requested her when she visited me to remove her red burqa and place in my ears the most pleasant of news. So she removed the red horizon which had covered the shine of the glow of the moon, and she threw down, rained down pearls from a beautiful ring which was fragranced. So Hazirin were bewildered by his filbadih kalam, and they admitted to his purity when he perceived and noticed their becoming familiar with his kalam and their leaning towards the passageway of his ikram. He lowered his head in the blink of an eye. Then he said, take hold of two other ash'ar, and he sang this poetry. And she proceeded the day separation was certain in black suits, and she was biting on the fingertips of a regretful, remorseful, speechless person. So the night appeared upon the bright morning, which were both carried by a beautiful branch, and she bit onto the mirror with pearls. So at that time, people realized that his price is huge, and his slow rain is plentiful, and they treated him well, and they beautified his libas and clothing. बराबर याद करके आना, कच्चा कच्चा नहीं, उल्टा पुल्टा मत याद करना। चलो जी जाओ, नमाज का टाइम हो गया। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। लो भाई 3 आदमी हैं।